ओके हमारा पहला सेशन था भगवत गीता द टाइमलेस साइंस। एक्चुअली प्रेजेंटेशन होता तो और अच्छा दिखता, बट एनीवे लेट्स वेट फॉर द केबल टू कम। सो प्रीवियस सेशन में हम लोग चर्चा किए थे व्हाई टू रीड गीता, राइट? एनीबडी रिमेंबर्स, लाइक यू हैव शेयर्ड प्रीवियस टाइम एज वेल, व्हाई टू रीड गीता, या कितने बार लाइक प्रीवियस सेशन में हम लोग जो भी डिस्कस किया कुछ याद है तो बता सकते हैं। व्हाई टू रीड गीता, और यू कैन शेयर। जैसे बहुत लोग नया भी आया है ना, सो यू आर हियर मीन्स यू वांट टू रीड गीता, राइट? इट्स अबाउट गीता क्लासेस। सो आप बता सकते हैं लाइक व्हाई यू वांट टू रीड गीता। यू कैन रेज योर हैंड्स। एनीबडी वुड लाइक टू स्पीक अप? यस। So actually, as we also see this shloka, Gita Sugita Kartavya Kimne Shastra Sangre Ya Swayam Padmanavasya Padmavini Shrita. So actually, Gita is the essence of all the scriptures that are present there. So when you are getting the quintessence of everything, so why not learn Gita? And ultimately, it is going to like get you closer to the God. It is going to tell you the reality of this life and what is your purpose in this human life. Definitely, you have got this material body, but the soul within you, it has got something spiritual touch, and you need to find it out. That will tell you everything. Thank you. So, ये चर्चा करते हैं Bhagavad Gita is the quintessence of all the Vedic literatures. Just like main point, one of the points was this: कि there are so many scriptures, and in the present time we have not got much time, right? After students, so right, you're actively involved in something or the other. We don't have so much time, and if we are getting the essence of all the Vedas in just 700 shlokas, why not just go for the essence? That is one of the things she's sharing. And anybody else? Yes, would like to share something, Guruji? Yeah, और कुछ points याद है? Anybody remembers reversals of life? Reverses of life we have discussed the previous class. Reverses क्या होता है? Like जो हम सोचते हैं उसका positive होता है. Yeah, it's a reverse gear. पीछे जाते हैं ना, right? So reverses of life everybody has to face, and we have given example of Arjuna. What is the reversal he has to face? He has to fight with family members. He has to fight with family members. So what? हम भी तो झगड़ा करते हैं घर में, तो हमारा भी तो होता है झगड़ा. What is the difference? Yeah, he has to fight in a war, so he's going to kill them. He may have to kill them, or he's going to get killed. So वो करना नहीं चाहते, right? Actually, I want to read Gita because I want to know myself, who I am. Yes. What is the purpose of my life? Sometimes I get confused to which path should I choose. But to have a clarity, I want to read Bhagavad Gita. Yeah. So this is one of the points which we have discussed. जैसे अर्जुन था, वो युद्ध के पहले he was confused, right? He did not want to do his duty. He was not determined, and he says, "I cannot." He throws away his weapon and says, "I will not fight." Right? And we have seen that after, जैसे भगवान उनको बताते हैं, भगवद गीता बताते हैं, उसके बाद अंत में वो कहते हैं करिष्ये वचनम तव. He says, "I will do whatever you want," and he is very ready to fight. Right? We have shown that picture where he is ready to shoot arrows. He is like, Krishna, बताओ किसको मारना है, मैं उनको मारूंगा, like that. Right? So this kind of situations हम सबको face करना ही पड़ता है. Right? Many times we'll be confused, we'll be anxious, don't know what to do, how to proceed. We seek guidance. We want somebody to help us, right? Bhagavad Gita can be that torchlight of knowledge. Just like Arjuna got help, we can also get help from the Gita. Yeah, this is one of the... Any other points? Quintessence. Gita is the quintessence. One point. Another thing is reverses of life. To face reverses, Bhagavad Gita helps us. Cable. Okay. And anybody remembers
some discussion about a big reservoir of water. Anybody remembers? बड़ा तालाब है, किसको याद आ रहा है? What was the discussion? Big water resource, reservoir of water and a small well. अगर बड़ा तालाब है, छोटे छोटे 10 जगह पर जाके अलग अलग चीजें करने की जरूरत है. Yes. In the earlier times, people used to go for पानी लेने जाते थे, कोई पीने का पानी कुएं पे, नहाने का पानी कहीं और, तो उसकी वजह एक बड़ा तालाब है जहाँ हमें सारे काम का पानी मिल सकता है. Yes. तो कुएं से बेटर हम उस तालाब के पास जाते हैं. तो ऐसी गीता है जिसमें हमें सारे ग्रंथों उपन्यास की नॉलेज. Yeah. So what is the idea? Thank you. So instead of going to different scriptures and try to understand Sanskrit, try to understand what is being taught, it is better better go to Gita. You have solution, or you can have guidance for all the questions in one place, and that is the Gita. And yeah, we have shown like many people time and again got inspired by Gita. ऐसे कुछ personalities को दिखाए थे, right? You remember any personality who was inspired by Gita? Oh, Will Smith. At least we have shown the video. At least he was inspired. Obama, somebody is telling yes. And Albert Einstein, Abdul Kalam, Mahatma Gandhi, Kalpana Chawla. These are few examples, right? They were inspired by the Gita and they used to carry Gita all the time. Okay. Okay. So today I wanted to share some more observations which we can see in our daily life, which can motivate us to read Bhagavad Gita more. Okay, presentation was there, it would have been nice. Anyway, so so 4 things I wanted to tell, 4 observations, right? The first observation is we are all servants. आप मानते हो? We are all servants. How? Anybody share? How? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो ऊपर वाला चाहेगा वही. Okay, we are all कठपुतली हैं. कठपुतली है. खाना खाता ना खाता. Okay, बढ़िया experience है लगता है. Right? Yes, I have a wonderful experience. I have shared previous time as well. और मतलब हम किसको सर्व करते हैं? जैसे yes, whom do we serve? जैसे आप किसको सर्व करते हैं? Do you serve anybody? Okay. We are all servants. Yes. कैसे? Yes. So actually, मैं आपको बताना चाहूँगी. If we are considering ourselves a body, we will be saying no, I'm not a servant of anyone, I'm a master actually. But if we consider ourselves as a soul, तो soul किसका है? उन भगवान का है. So as a soul, we all are the servants of the Supreme Personality. Yes. And we have to serve Him. This is our like purpose of this life. Yeah. And cherish that like service. Yes, that is true. And even in this body, suppose you're all students, don't you serve your teacher? अगर टीचर बताएगा भाई असाइनमेंट करो, करना ही पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है. Even if you don't want to do, you have to do. Teacher serves you. You serve your parents, your siblings, isn't it? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को सर्व नहीं करता है. Even he may be a billionaire, still he serves his family. He serves somebody or the other. And if you go deep, just like she was telling, if we don't, we have to serve our senses, isn't it? इंद्रिय तृप्ति के लिए तो कार्य करते हैं ना. खाना पीना जबरदस्ती करना पड़ता है, right? Even though we don't want to suppose watch movies during exams, जबरदस्ती करना पड़ता है. We are forced, right? So we are all servants, right? And have you seen, सेवा करते हैं, but are we happy? सेवा करने से खुश होते हैं. जैसे suppose you are students, टीचर असाइनमेंट देता है तो खुशी होता है. खुशी खुशी करते हैं क्या?
No, so we हाँ, एक दो बच्चे होंगे जो करते होंगे, राइट, बाकी तो करते नहीं है. इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज सेम वे आफ्टरवर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट एम्प्लॉयड, राइट. सो एवरीबडी वांट्स टू गेट प्लेस्ड, इजंट इट? ऐसा कोई है कोई प्लेस नहीं होना चाहते हैं? प्लेसमेंट एवरीबडी वांट्स, राइट. वाओ, कैसे हुए? आपका वर्षन इट्स अमेजिंग. लेट मी डुप्लीकेट. ये जादू कैसे हो गया? वो दीदी की बात सच होगी, जैसे भगवान की इच्छा होती है वैसे काम होता है. It is duplicating. Prabhuji, should I share the presentation via Zoom? Yeah. Zoom से connected है. Prabhuji, make me host or co-host. ये लाइट तो जला दो. I will not be visible there. Yeah, even जैसे employment के बाद भी ना, so before now we want to get placed. Once we are placed, we all want, say IBM, like software companies or big companies, we want to work. And वहां पर जाने के बाद बॉस को तो सेवा करना ही पड़ता है, isn't it? And it's not so easy, right? I always give example of my brother. Right? बताया आपको? No. Okay, he just passed out from VIT, and I remember him calling during his 4th year. He used to call me for placements. आज ये आने वाला है, पता नहीं क्या होगा. Very excited. And होने के बाद मतलब sometimes, most of the times he got, हुआ नहीं, मेरा ड्रीम कंपनी हुआ नहीं. He was crying, always he was crying. ऐसा 1 महीना बीता, 2 महीने. In the second month, okay. Okay. So he was very excited for getting placed, and placements उतना आसान तो नहीं है. Many times he did not get placed and he used to cry. He used to say सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है. सबका ड्रीम कंपनीज, एक नहीं दो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है. And he got placed and he had to go to Gurgaon. After going there for 5-6 months, he was fine, right? His boss was okay. And after 6 months, what happened? The person with whom he is serving, he became his boss. You got the idea? जिनके साथ काम करते थे वो उनका बॉस बन गया. जब से वो बॉस बना, इनका हालत खराब. So again he used to call every time. अरे इनको तो कुछ आता नहीं है, ये सब मेरे से सीखता था, और ये तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, कुछ BCA कुछ कर लिया, and मेरे से एक्सेल बना रहा है, right? He used to get maybe 50,000, something like that, not much. 50,000 he used to get, and पूरा पलट गया, right? He always used to cry. Then he told अभी मैं MS करूंगा, right? मैं ये झेल नहीं पाऊंगा, MS करूंगा. फिर MS के लिए he had to give GRE. So first time he gave, and he did not get that much. Some 300 he got, but he was not getting where he wanted to go. And again he gave, right? So much money he has to invest. जो भी वो पैसा कमाया सब हो गया उनका. And he went to do MS. Now he is doing MS, and now he calls saying, अरे वो प्रोफेसर मार्क्स ही नहीं देते हैं, right? Now recession आ गया. Now recession is going on, right? If I don't know whether you know it or not. Now recession is going on. अभी placements का चिंता है, right? So this is going to happen with all of us, right? So these are reversals which we have to face.
if you are not, strongly rooted by spiritual values, it can be very difficult. Okay, so let me start today's. Okay, yeah, so this is what I was telling. So we are all servants, we all seek relationships, we want proprietorship, and temporariness pervades this world. These general observations which can be observed in our life. हमारे जीवन में देख सकते हैं. And Bhagavad Gita can give us new insight into this. ऐसे पिछले बार भी डिस्कस किए थे. क्या गीता पढ़ने से हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा? फिर क्या मतलब देन व्हाट इज द पॉइंट? नजरिया बदल जाएगा. एटलीस्ट the way you look into that problem will change, right? So the same thing can be applied here. Knowledge of Gita helps us to look into this in a different manner, and day to day you have to face all these things. Day to day you will face. So let us see. Everyone serves someone, right? Parents serve child. What is happening? Teacher, student, teacher. नेता को करना पड़ता है. But जिनको भी सेवा करते हैं will never be satisfied. Just like I told example of my brother, how much ever he may give, you will never be satisfied, right? But there is one person, who serves very happily, very lovingly. Can you guess who is that person? देख लिया क्या? हरे कृष्ण. Yeah. So कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुशी खुशी सेवा करते हैं? Parents, especially mother, you might have seen, right? कितना भी थके, like how much ever she may be tired, she is ready to serve you. So what is the point? Selfless service can really bring you happiness. She serves you selflessly, isn't it? She did not expect, अरे बड़ा होके मतलब कुछ करेगा. आजकल तो ऐसा हो गया वैसे, but in general expectation नहीं होता है, right? So in the same way, Gita gives new dimension to this. You serve selflessly Lord, then you can be content. It gives example of Arjuna, right? Arjuna as a warrior, he served Lord by fighting. Okay? The same way, a farmer can serve Lord by his farming, right? As students, you can serve Lord by studying properly and by reading Gita as well, and by adding spirituality, basically, right? Yeah. So in this way, even you are serving, you can be content. Okay. So we all, this is the second observation, we all seek relationships, isn't it? Students है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है, right? We all seek relationships, right? We want friends, right? Boys, girls, everybody wants good friends. Children and parents, like parents want good relationship with their child. But most of our relationships are, क्या हो रहा है यहाँ पर? What is happening? Boys, बता दो. Come on, boys. Result खराब है. So mostly our relationships are like this, right? ये तो बता दो, right? Fighting is happening. क्या है? दुखी है, right? So what is the point I'm trying to say? All the relationships are made based on bodily platform. What does it mean? If I ask you, like, we all have designations. Suppose मैं पूछूंगा, आप कहाँ से हैं? Yes, Roji. Tell me about yourself. I'm from Muzaffarpur, Bihar. Yes. मतलब अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैं वैभव हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ, मुजफ्फरपुर
I am graphic Karayan, right? CSA हूँ, Indian हूँ, male हूँ. Based on this, we make relationships, right? So Gita says, how much ever you may try, these relationships will result in pain or grief, right? And if you don't have, much understanding about yourself, it will be very difficult to come out. That is why you see nowadays, so much depression. Depression has become, or mental health issues, especially in India, it has become too much. Right? It is said that actually, Leela Purushottam Prabhuji, or Sir from IIT Kanpur, he shared one statistic. He said, Hare Krishna, sir. Hare Krishna, sir. So he was, shall I continue, sir? Yeah, he was sharing more than 60% of Indian population will be victims of mental health issues by 2030, like that, not far away, will become victims to mental health issues, right? So what is the idea? मुझे तो लगता है कि अभी ही है. Already है. हाँ. Yeah. 2030 तक जाना ही क्यों है, मेरे को तो हर जगह दिखता है. Yes. So it is very essential. If you develop, deep understanding, you can save a lot of pain. Even now, मैं जब मास्टर्स कर रहा था ना, at that time I got to know about Gita. मैं यही सोचा करता था, भाई थोड़ा पहले पता हो जाता, बीटेक में कितना पेन से बच जाता है, right? Bachelor's, now if I look back, bachelor's life was hell. But at that time, it was, they were happy moments for me. But now when I look at it, it was not happy. It was very, very painful. I had to go through so much pain, right? So Gita advises us to seek relationships on a divine platform, right? What is that? At least try to understand whatever is being told. As we discuss more and more, you will gain more understanding, better understanding. Okay. So Gita advises us to go in a deeper level, to develop relationships in a divine platform. What does it mean? We'll discuss more about it. Just like she was mentioning, Gita says that we are all souls, हम आत्मा है, और हमारा भगवान से रिश्ता है. Everybody has unique relationship with Lord, right? And by reviving that relationship is the goal of life, it says. Okay, and that is how you can be really happy. So this is, in one sense, this is what to say, Bhagavad Gita ये बताता है, right? This is the conclusion of Bhagavad Gita, right? What is the action you have to do? Revive your relationship with Lord, and that relationship is very happy, just like you can see here. So this is how it can be, right? जैसे फोटो देखते ही ना खुशी आता है ना, right? We are with somebody, some dear friend, we are happy, right? So this is the second observation which I wanted to share. Just like मैं आपसे बताऊंगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा, आपको पूरा एक आइलैंड दे दे रहा है, पूरा घर, बंगला, कार, सब दे दे रहा है, but you are asked to stay alone. Would you be happy? Right? We cannot be happy alone because we have natural relationship with Lord. Okay? Yeah. So what is the idea? Bring in Lord in your relationship. Just like, mother can serve a child. Naturally, mother serves a child. But if she serves him thinking that he is also son of God, right? भगवान के दिया हुआ देन है, then she can serve him better and both can be happy. In the same way, politicians as well. Politicians, if he serves his people, understanding that, these are also children of God and I have to serve them, then he can bring in morals, right? Morally he can serve, right? सब बोलते हैं ना anti-corruption, right? It has to be rooted out, from deeper levels. बाहर से ना संभव नहीं है. It has to be dealt in deeply. So this can be a solution. This is the solution, I have to say. So another observation which I wanted to say, we seek possessionship, proprietorship, isn't it? जैसे स्टूडेंट से आप लोग, राइट, व्हाट यू हैव, क्या है आपके पास? शायद लैपटॉप है, छू लिया तो अरे मेरा लैपटॉप छू लिया,
या if you go little, क्या है मेरा मोबाइल, कोई गलती से भी छू लिया हो जाए, खत्म कर देंगे उनको, ऐसा हो जाता है, पासवर्ड लगा देते हैं, 3-4 पासवर्ड हो जाता है, राइट? अरे देखना ही नहीं चाहिए तुमको. But everything is given to us, isn't it? Do you accept the statement? Everything is given to us. We may say laptop is mine. I remember I have changed at least 3-4 laptops by now, right? You are starting, so maybe you are using first laptop only. Agar all these possessions, we are going to have it for some time only. They will be snatched away, right? Everything is given to us, they will be snatched away as well, right? Just like family is given to us. Be prepared, they will also be snatched away, right? And you may have your car, bangla, ऐसे मतलब कितने ऐसे बहुत बड़े अमीर लोग भी ना, they go bankrupt in, we don't know what can happen at any time, so we don't possess anything. Just like, I have few examples for you. Anybody knows who is he? Anybody knows? He is US president. He served as US president, and he was Hollywood actor as well. His name is Ronald Reagan, right? He has brought in, इनके नाम पे ना Reagan or Reagan Economics theory. economic theory. Yes. So he has brought in a lot of changes in economics when he was president, right? He served twice, right? But he died of Alzheimer's. Do you know what is Alzheimer's? नाम तो सुना होगा. Memory loss. Memory मतलब वो कौन है खुद को पता नहीं होता, right? If you look deeply, who we are, we don't know exactly. But anyway, in general, नाम भी भूल जाते हैं, बगल में भी है but भूल जाते हैं, right? So what I am trying to say, he brought in so much reform using this intelligence, but it is snatched away in no time. Do you know who is this? कौन है? Muhammad Ali. He used to say, I am the greatest. I am the greatest. And he used to be a very fierce fighter. Knockouts. बस एक मुक्का दे देते खत्म. He used to be, he can be said as greatest of all time at that time, right? But he has suffered from Parkinson's disease. Do you know what is Parkinson's disease? He cannot even lift glass. He had been a greatest fighter, and he cannot lift glass. You'll be shaking. It will slip away. It's like that. So what I'm trying to say, your strength, your beauty, your intelligence, whatever we are thinking that it is mine, will be snatched away, right? If we are not deeply educated, it will be very painful. Yeah, so knowledge of Gita can help us to become wise and content. We all have to go through these things. Yeah. So this is the last, this is another observation which I want to say. Temporariness pervades this world. Is it or isn't it? Yes. हर जगह पर temporariness व्याप्त है, right? I remember our youth will be taken away one time. I remember, few maybe घर गया था, maybe 5-6 months before. So I came out and I was going to some shop. छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे, right? बॉल खेल रहे थे. वो बॉल देने के लिए ना बुला रहे थे, अंकल बॉल दे दीजिए. मैं सोच रहा था अरे किसको बुला रहा है, right? Then I saw that he is calling me only, right? Now I have become an uncle, right? Youth is gone, right? The same way, everything is temporary here. Just like to give. Capulet in Urdu is very popular. What is it, sir? जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा. What does it mean, sir? यूथ जो है वो जाने के बाद वापस नहीं आता, और ओल्ड एज आने के बाद जाते नहीं, right? So just few examples. This is the Empire of Great Britain. ऐसा सुना होगा आपने, sun never sets in Britain. सुना है? But now nothing is there. It is smaller than UP, right? UP state से भी smaller है in size and population as well, right? And USSR सुना है? Yes, sir. USSR has been dismantled. Notice
Russia. It is no more there. The same way, everything is temporary. Just like, we are given everything and will be taken away. This is the nature of this world, right? If we don't contemplate on this, and we are going to get hit very hard, right? The knowledge of Gita will help you to face these challenging situations. So this is one more motivation, which can help you. Yeah. This is one more thing. The temporary to hey world, but Gita advises use this temporary world, transform yourself, and transport from this world and go back to where you were. Just like you saw, somebody was with Krishna and he was happy. So Gita advises us, why you are suffering here? This is not your place, right? You are supposed to be happy all the time. Go back there, right? And gives the process also. Okay. So I hope you remembered. Just let me show you. So these are the 4 things we have discussed. Yeah, we are all servants. We seek relationships. We want proprietorship. Temporariness pervades this world. Gita advises, serve that master by serving whom you can be happy. You got getting the point? किसी को भी सेवा करते हैं भाई खुशी होता ही नहीं, right? So Gita advises, yes, that is how it is bound to be, right? भगवान की सेवा करो. We all seek relationships. Gita advises, seek relationship where you will not be hurt. जिनसे भी relationship बनाया जाए, will it not be finished at one point of time, right? शरीर से बहुत आसक्त होते हैं, ब्यूटी से बहुत आसक्त होता है, but it will be taken away. Proprietorship, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, right? But that will also be taken away. In the same way, temporariness pervades this world, but this world can be used to transform ourselves. Okay, so let me go forward. So in the अभी तो गीता क्यों पढ़ना है वो बताया, and one more thing is there. After that we'll discuss how to approach Gita. गीता पढ़ना है, but कैसे पढ़ाया जाए? Just like Prabhuji always gives this example. गीता कई लोग पढ़ सकते हैं, but they can get different conclusions as well. Just like on the previous week, Sir was discussing. Gandhi ji भी गीता पढ़े हैं. Godse also studied Gita, right? One has taken to violence, and one says non-violence. So why is it, right? कहाँ पर दिक्कत आया? सेम ही तो बुक है ना, एक तो दूसरों को मार दिया, एक तो बताते हैं नॉन वायलेंस. सो व्हाई इज इट सो? सो वी जस्ट डिस्कस दैट. Yeah, so Bhagavad Gita enlightens us in such deliberations. Yeah, this has been discussed already. Let me go forward. This is the shloka from Bhagavad Gita which summarizes those 4 things which I have told. Yeah, can you recite with me? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति. So here Krishna is saying Bhoktaram. This is 529 Bhagavad Gita 5th chapter 29. Bhoktaram, he's saying I am the enjoyer. We want proprietorship, right? Yeah, he says I am that. I am the proprietor. You are not the proprietor. Sarvaloka Maheshwaram. I'm the boss of everybody. So serve me. Okay? I am that master by serving whom you can be happy. The service ना ऐसे देखा जाता है, सेवा करना है तो सेवा करना है अच्छा नहीं लगता. We want to become boss, right? But Gita says you become das and you'll be happy. Okay? Suhrudam sarvabhutana. Suhrudam. Relationship. Suhrudam means well-wisher. Right? We may have so many friends. I realized this actually. And this is like turning point for me in my masters. Bachelors also I've seen. बहुत सारे दोस्त तो थे. Right? I used to take them. We used to go to movies or कहीं भी चला गया. Right?
I used to be in the forefront and used to lead. But I can clearly see that, not all are well wishers. Not all तो छोड़ दीजिए, एक भी well wisher नहीं था, बस आते हैं, right? I realized that. And here Krishna says, Suhridam Sarvabhutan, I am Suhridam. I want your benefit, right? He says, I am the person who really want your benefit, right? Then he says, Gyatva ma shantim richati. Knowing this about me, you can be happy, right? You can come to me, then you can be happy, like that. Okay, so let me go forward. Can somebody read this? A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor of and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Okay, thank you. Yeah. So this is one more motivation. I'll go through very quickly. We have discussed this before as well. We all have started from a single cell, isn't it? एक cell से शुरुआत हुई. One small cell you can see there on the top. This is how baby grows. Detailed description is there in Srimad Bhagavad or scriptures as well. And now we are like this. Though we have started from a single cell, even in our body. So actually, they are different cells, right? Skin cells are different. Our nails are different. They are made up of different cells. Hair is different, right? And our tongue, different cells. Eyes, different cells. More than 200 different varieties of cells are there in our body. And total cell count is in trillions or billion. Trillion. So many cells are there and all started from a single cell. And even science is studying it, right? But it cannot replicate. Replicate समझते हैं? जैसे just like the way we grow in terms of both hardware and software. What I mean, we grow in terms of our intelligence. बुद्धि तो होता है ना अभी, जब छोटे होते हैं कुछ भी खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, कुछ भी दिख जाते हैं मुंह में लगा लेते हैं, right? At least now we don't do it. बुद्धि तो in terms of intelligence, we grow as well as we grow in terms of body, right? That is what I told in terms of hardware and software, right? Science has not been able to replicate as till date. And one of the famous scientists, his name is John von Neumann. You can go and search for him. The computers, John von Neumann is called the father of digital computing. Yeah. उन्होंने in 1950s इन्होंने प्रपोज किया था एक थियोरी, खास ऐसा समय आएगा जब हम एक सिंगल चिप, लेट अस अज्यूम सिंगल चिप will be there, ऐसा बनाएंगे हम, it will grow both in terms of software and hardware. But what is the present state? Even in terms of software, we have not reached a state where our software also progresses in the way we want. उस स्थिति पर अभी पहुंचा नहीं, right? So we were not able to replicate. So why I am telling you? Because we are growing in terms of software and hardware because of the soul. This is what Gita says, right? ऐसे हम लोग कहते भी है, even in our daily language, if somebody passes away, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं ना चला गया, कहते हैं चला गया, कहते हैं body is lying there, कौन चला गया? आत्मा. This understanding we have, right? Gita says that because of that you are growing, isn't it? जैसे हम कहते हैं चला गया, body will decay, right? Body will smell, right? How much ever dear he may be or she may be, the person who has passed away, do we keep him at home? घर में रखते हैं, शाम तक जला देते हैं, right? This is the sad truth. This is the reality. So Gita says everything is happening. You are growing in terms of intelligence and hardware because of soul, right? There is this shloka, very famous shloka from Srimad Bhagavatam. Can you recite after me? Yeah. Shri Bhagavan Uvacha Karmana Daiva Netrena
Janturdehopapattaye Striya pravishta udaram Pumshoreta kanashraya. So Srimad Bhagavatam, it is said that soul enters the womb of mother, right? Along with the sperm. That is why it grows, right? If soul doesn't enter, there will not be any growth. Can somebody read the translation? The personality. Look at it. Yes. The personality of I know you're very into this. Just let us give transfer. Yeah. the personality of Godhead said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of the woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. So what is the idea? Soul's existence, science has been denying till now. It says antimatter. What is that antimatter? It has been not, discovered or like, उसके ऊपर ज़्यादा उतना हो नहीं पाया अभी तक, right? So that is the idea, right? So this is, and Gita says that you are encaged in this. हम तो आत्मा है, and we are encaged in this body, just like एक कुत्ता है, right? Suppose we are at least in a good position now. We are able to read. We are getting food. We are living happily. कुत्ता के जीवन ऐसा होता है क्या? Right? ऐसा तो होता नहीं है. कोई आके भगा देता है. जैसे उड़ता है, वो इधर उधर जाता है. खाना कहाँ मिलेगा मेरे को? Right? That is how its life is. Do we want that life? But we will be forced based on our actions. And even in this life, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं. जैसे बचपन में ना, जैसे चिड़िया को देखते हैं लगता है मुझे भी उड़ना है. But we can't. Isn't it? We are bound. We are bind in a body. Just like a parrot in a cage. We are bind. We are bound. हम बहुत कुछ नहीं कर सकते. We are very limited. जैसे पानी के अंदर जाके रह सकते हैं क्या? We can't. ऐसे like we are limited. And Gita advises us, you can break this cycle. Right? अगर इस जन्म में जब मृत्यु हो जाता है, हमारे कर्म के हिसाब से ना हमको किसी भी जंतु का शरीर मिल सकता है. This शरीर is just like I'm wearing this shirt. You're all wearing shirts. So this body is dressed for our soul. Just like this dress is dressed for my body. समझ में आ रहा है? And वो ड्रेस कुछ भी हो सकता है. इस जन्म में तो हमको अच्छा खासा मिल गया. एटलीस्ट ग्राफिक में आके पढ़ रहा है, राइट? कोई कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा ठीक है, ठीक ठाक है, एटलीस्ट लाइक नॉट सफरिंग सो मच. बट कुत्ता बिल्ली का मिल गया, भाई क्या हो गया? कुत्ता बिल्ली तो छोड़ दीजिए, शरीर ही मिला, मे बी इन सम स्लम एरिया इन बॉम्बे. इज इट एडवाइजेबल? लाइक यू वांट इट? नोबडी वांट्स इट, बट यू विल बी फोर्स्ड, एंड यू कैन ब्रेक इट by this knowledge of Gita, right? Yeah. So I have a small video for you. Who is he? अच्छा लिख तो लिया वहाँ पर. Yeah. पिछले बार मैंने इनका जिक्र किया था. He is Sridharan. He is called as Metro Man. इन्होंने दिल्ली मेट्रो, right? He has been the prime member who has developed entire metro, right? So he is Padma Bhushan, Padma Vibhushan. Yes. So this is a small video of 2 minutes. I don't know whether sound will be there or not. Sound के लिए cord connect करना पड़ेगा. Okay, let us see. He is just sharing. This is an interview, and it's a long interview. I just cut that small clip for you. What is it about the Gita that inspires you so much that you read the Bhagavatam every single day? It gives practical tips how to solve the day-to-day problems of life. And that is what is required. In any professional life, there are so many problems coming up, and Gita helps you how to tackle these problems. That's going to inspire a lot of people out there to go and read the Gita if they haven't really. I think it is required. Do you recall anything offhand that you read in the Gita that you still live with today? There is one slogan in Gita which is very, very appropriate and necessary for every doer, everybody. Mukta Sanko Anahamvadi Drityutsaha Samanvidaha Siddhi
asadhyo nirvikara sakarta satvika uchyate. So if this was translated from Sanskrit to English, what would it say? It only means whenever you do a work, you should not be bothered about the fruits of that work. I mean, you should not expect any gain out of the work for yourself. Then you should do it in such a way with full dedication and full enthusiasm. And you should not be dismayed by the good results or the bad results. A man who views his work in that fashion is a virtuous doer. It means that. And that's what you embodied for yourself. That is what I practice. Yeah. So just like he is inspired by that specific particular shloka, ऐसे गीता में ना बहुत सारे श्लोक है. Who knows by what shloka he'll be inspired? ऐसे बहुत लोग से मतलब हम खुद मिले थे. श्रील प्रभुपाद को कितने लोग जानते हैं? इस्कॉन जानते हैं? ISKCON's founder Acharya is Srila Prabhupada, and he has given immense literature, especially in English, right, for the English speaking people. At least अगर वो translate नहीं करता English में, मैं मेरे जिंदगी में कभी गीता नहीं पढ़ता. सुना तो है, but I would have never read. And when I've met people, students especially, I know people, छोटे छोटे बुक्स भी होते हैं प्रभुपाद जी के, 30 रुपया 20 रुपए का, छोटे छोटे बुक्स. वो बुक्स पढ़ के they have dedicated their life now, right, and it has changed their life altogether. So just like he's inspired by that specific shloka, and he's very happy. He tells he gets up every day at 4 o'clock. The full interview, if you see, he gets up at 4 o'clock, and his life is very inspiring actually. So what is the idea? Gita, please read Gita. You may be inspired by some shloka which will carry you to pass through this challenging life. Okay, so now enough of read Gita motivation, right? At least I hope maybe something might have hit you. अरे पढ़ना चाहिए शायद, right? So पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ेंगे तो maybe we'll get maximum benefit. Just like that example I was giving. So both Mahatma Gandhi and Godse have read Gita. They quote Gita, and their actions were different, right? So how should we read so that we get the actual essence of the Gita, right? And the answer ना, उसका answer गीता में ही दी गई है. अगर गीता पढ़ेंगे, you will see Krishna clearly tells what to do, right? But unfortunately ना, Bhagavad Gita as a book है, if you Google, there will be so many commentaries. Commentaries ना, like commentaries means like to explain the shloka they write, right? And there has been a lot of misinterpretations as well, right? So idea is what to read, right? अगर suppose mathematics पढ़ना है तो संस्कृत टीचर के पास तो नहीं जाते हैं, right? सेम में गीता सीखना है तो गीता जानते हैं, तो गीता को जीवन में अप्लाई कर रहा है, better go to that person, right? So that is the main basic idea. And कैसे गीता को approach किया जाए so that I'll get maximum benefit. So 3 spirits are discussed in the book. Once you get the book, you can read. Today we'll give the books as well. So first thing is, you can read it out loud. Lord Krishna is the absolute truth. Why I'm telling this? मतलब ये समझना बहुत important है. So गीता का value आता है क्योंकि वो भगवान ने बताया है. भगवद गीता. What does it mean? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, right? So Bhagavad Gita gets its value because it is spoken by Bhagavan, Krishna. अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंदर जाके समझने के लिए कोशिश करेंगे, शायद उतना बेनिफिट नहीं पाएंगे आप. Give me 2 minutes to elaborate this point. Yes. In the last lecture, one of my MCA students asked, "Sir, faith नहीं बनता है, भगवान को कैसे विश्वास करें, ये नहीं आता." इसका एक बिल्कुल आपको एक ऐसा इंसिडेंट सुना रहे हैं. एक आपको मालूम है एटा मैनपुरी एरिया उत्तर प्रदेश में आता है. तो यहाँ पर एक ये बात करीब आज से 70 साल पहले की है. एक पंडित जी थे, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते थे. तो एक जगह और उसी इलाके में बहुत बड़ा जगवा था.
तो जिन सेठ जी के यहाँ उसने रेकी किया, जिन सेठ जी के यहाँ अगर हम डकैती डालेंगे, लूट करेंगे तो बहुत माल मिलेगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो वो पता करके वहाँ आया तो देखा कि उसी गांव में श्रीमद् भागवतम की कथा वो पंडित जी कर रहे थे। तो वो बैठ गया क्योंकि बहुत लोग थे, गांव की मामला था, जब तक लोग हैं तब तक अकेला कैसे होगा, हल्ला बचा देंगे। तो कहने लगा जब ये लोग चले जाएंगे तब हम इनके घर में इंटर करेंगे। और लोग आभा अतुलनीय, ये उसने सुना। उसने भी बहुत लूट की थी। पंडित जी ने उसका एक्सप्लेनेशन किया बड़े अच्छे। उसने कहा पहली बात तो मैं सेठ के यहाँ जाऊंगा, इसके गार्ड वगैरह भी लगे होंगे, नौकर चाकर हैं, वो देख लेंगे, कहीं पकड़ लेंगे, तो हमारी हमेशा डर बना रहता है। क्यों ना हम मथुरा चलते हैं, काशी में है, और वहां पर वो पंडित जी बता रहे हैं कि वो अकेले आता है गाय चराने, छोटा बच्चा है, इतने ज्यादा आभूषण पहने हुए हैं, हम उसी को लूट लेते हैं। लेकिन पंडित जी से जरा और जानकारी कर लेते, तो पंडित जी कथा बता दीजिए। अच्छा, वो बड़ा फेमस था, वो लोग उसके नाम से डरते थे। तो जब पंडित जी अपना झोला वोला लेके चले तो वो जो है पीछे चला पंडित जी के, आवाज लगाई। पंडित जी ने कहा कौन? पंडित जी के लिए कौन? तो उसने अपना नाम बताया। पंडित जी डर गए। पंडित जी कहने लूटने आया। कहते भैया इतनी दक्षिणा मिली है, इतने फल मिले हैं, इतनी मिठाई मिली है, ये सब ले लो और हमें बस छोड़ दो, जान दो देना। उसका ये भी था, वो लूटने के बाद मर्डर कर देता था। पंडित जी बड़े, उसने कहा पंडित जी ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे बताओ जिसका तुम ये कहानी बता रहे थे, वाकई में ये वृंदावन में मथुरा में यमुना के किनारे आता है? अब पंडित कुछ कहा मामला भगवान तो कहेंगे आगे बिल्कुल आते, रोज आते हैं। और हमने तो बहुत कम वर्णन किया है उनकी सुंदरता का, उनके आभूषणों का, वो तो और ज्यादा पहन के आते। वो बस जो पंडित जी ने डिस्क्रिप्शन दिया उस भगवान का जो बालक के रूप में, वो उसी का ध्यान करते हुए चल दिया। एका से करीब उसे 7-8 दिन पहले चलते लगे, पहुंच गया वृंदावन। वही पंडित जी ने जो जगह बताई थी जमुना की किनारे पहुंची, तो देखा कि दिन है तो लोग पहचान रहे, तो एक पेड़ पे चल बैठ गया। और वो पंडित जी ने बताया था सुबह जैसे ही सूरज निकलता है वो अपनी गायों को लेके आया। रात हो गई थी तो ऊपर बैठा है और बस नींद आई में कुछ आई, ये 7 दिन से वो वही सोच रहा था, वही पंडित जी ने जो बताया था, कैसे है, सुंदर है, ऐसे आभूषण पहने हैं। देखा कि गायों की आवाज घंटियां बजने लगी। जैसे ही सुबह हो रही थी, गाय आई और पीछे एक लड़का करीब जो है 7-8 साल का, अद्भुत सौंदर्य और अभूतपूर्व वो आभूषण पहने वो आ गया। ये उतर आया नीचे, बिल्कुल भगवान के सामने खड़ा होके और दर्शन करे उनके। और भगवान ने कहा क्यों हमें देख क्यों रहे हो? कहने मैं आया था तुम्हें लूटने, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ से इधर से उतारता हूँ तुम्हारी सुंदरता कम होती। मुझे तो ये लग रहा है जो घर में हमने लूट के दूसरों से रखे, अगर मैं वो भी लाऊं और तुम्हें पहना दूं तो वो और अच्छे लगूं। मैं अब लूटना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें देखना चाहता। तो भगवान ने कहा है तुम लूटने आए इतनी दूर से, तुम यहाँ से ले लो। मेरी नंद बाबा की बात तो और है, मैं कल है ना। उसने जबरदस्ती भगवान ने एक अपने हाथ का कड़ा निकाल के दे दिया। उसके बाद भगवान जी ने अंतर ध्यान
वो कहने लगा ये पंडित लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जो इतने सुंदर है उनका तो कुछ भी वर्णन नहीं कर रहा। तो तुरंत वापस चला पंडित के घर, फिर वापस चला 7 दिन बाद पंडित के घर, रात में पहुंचा, दिन में तो नहीं, छुपते छुपाते, और पंडित के घर की कुंडी खटखटाई कि पंडित दरवाजा खोलो। पंडित ने कहा कौन? अब 15 दिन हो गए थे, उसने अपना नाम बताया। पंडित ने सोचा आज तो मार डालेगा, क्योंकि मैंने झूठ बोला था, मिला तो कुछ होगा नहीं। और ये आज तो पंडित जी ने कहा खोला डरते डरते, और पत्नी से कहा घर में जितने सोना आभूषण और पैसा है सब निकाल के रख दो, क्योंकि ये बस जान छोड़ दे, ले जाए तो ले जाए। कहने लगे भैया यही सब करने हैं, सब ले। कहा पंडित ये सब मैं लेके नहीं, पहले तो तुम ये बताओ, तुमने जो पढ़ा के लोगों को बताते हो, इतने लोग तुम्हारी हजारों लोग कथा सुनने आते हैं, वो तुम सब झूठ बताते हो, तुम बहुत सुंदर है, वो तो बहुत सुंदर है। तो पंडित को लगा ही गॉट मैड। तो अब पंडित ने कहा कि तुमने देखा उन्हें? हाँ देखा। तुमने देखा होता है ना, वैसे कैसे देखा? पंडित ने कहा इतने बड़े ऋषि तपस्वी हो जाते हैं, उन्हें तो दिखते नहीं, उन्हें चोर को दिखेंगे। तो उसने कहा देखा है, देखो ये दिया भी। तो जैसे ही अपना वो गमछा खोला तो पंडित के घर में पूरे में वो ज्वेल्स जो उसमें लगे थे चमक। अब पंडित भी विद्वान तो थे, वर्षा नहीं थे, वो भागवतम पढ़ते थे अपनी आजीविका के लिए। तो पंडित उसके पैर रखते थे और रोने लगे भयंकर, मतलब मैं पढ़ता हूँ और ये चोर होते हुए हमने देखा। कहने लगा बस तुम हमें लेके चलो उनके पास, मैं भी दर्शन दूंगा। तो उसने यही बताया कि तुम तो उनका वर्णन कुछ करते ही नहीं, एक्सप्लेनेशन तुम तो ऐसे सुनना, तुम्हें ये बताना चाहिए, तुम्हें ये बताना चाहिए। तो पंडित उनको लेके चल दिए, चोर फिर चल दिया उनको लेके पंडित को, फिर 7 दिन लगे, दोनों जाके उसी पे बैठ गए। पंडित बार मुझे आए, हाँ अभी रुको बैठे रहो, सुबह होगी आए, उतारा फिर पंडित आ रहे हैं, उतर आए, पंडित भी उतर आए, वो भी उतर आए, कृष्ण आए, अरे तुम फिर आ गए, अब क्या चाहिए? अरे वो पंडित ये आपका वर्णन करते थे, इन्हीं से पता पूछ के नहीं आया था, और जिनको बताने गया था कि ये तो आपका कुछ वर्णन सही नहीं था, ये लोग जरूर आते खूब सुनते हैं बट ये सही एक्सप्लेन नहीं करते, तो इन्हें बता देंगे, ये मान भी गए कि हमें बुलवाओ दोगे। अब पंडित उसको यूं कर रहे, किससे बात कर रहे हो तुम, हमें दिखिए, ये क्या खड़े सामने, ये अगर हमें नहीं दिख रहा। तब उसने चोर ने फिर भगवान से पूछा क्या हमें देख दिखाई दे रहे हो, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आज लड़की दिख नहीं रही है, उसी के लिए कहानी में सुना रहा हूँ, विश्वास क्या है। तब भगवान मुस्कुराए कि तुमने मुझे देखना चाहा तो तुम्हें दिख रहा हूं, ये जीवन भर पढ़ते रहे हैं लेकिन इन्होंने कभी देखा नहीं। जैसे जो भागवतम में लिखा था, या जो ये समझते हैं आजीविका के लिए मेरा नाम उच्चारण करते रहे, तुमने तो जो रूप इन्होंने बताया उस पर विश्वास किया और उसी को देखते चले आए 7 दिन। मैं तुम सोए हो, तुम्हारे अंदर वो छवि बनी है, मैं वही हूं। तब पंडित जी रोने लगे, तो कहने लगे मुझे भी दर्शन दो, तो उन्होंने दर्शन दिए। और आज भी आपका वृंदावन का जो मंदिर है बांके बिहारी जी का, पूरे जीवन वो चोर जो था वो वहाँ पहरेदार बन के रहा, और वो पंडित की वहाँ पूजा करते, वो कभी वापस नहीं गए। दिस इज ट्रू स्टोरी। विश्वास ये ईश्वर को जब हम देखना चाहते हैं तो उसमें फिर ट्रूनेस होनी चाहिए, वो हर जगह हर किसी के अंदर है, वो आपके अंदर, वही आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है, उस जीव जड़ अचल हर जगह है, लेकिन वो बदल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब तक वो विश्वास नहीं आएगा तब तक वो नहीं आएगा। तो वही ये जो पहली लाइन है यही कि गीता वो अमृत है जो खुद भगवान ने अपने श्रीमुख से दिया। थैंक यू सर, बहुत सुंदर स्टोरी है। यू हैव सीन, या यू हैव फेथ। इसे
मतलब we have many examples like this, who is very firmly convinced and he want to see Lord sincerely, उनको रास्ता दिख जाता है. You know, Krishna will guide him. You know, he will send his devotees. Yes, we'll see. आगे देखेंगे हम. खुद अरेंज सब कुछ अरेंज करते हैं. सो या भगवत गीता पढ़ने का, तो हम अप्रोच करते हैं भगवत गीता को, अंडरस्टैंडिंग दैट यू नो कृष्णा भगवान स्वयं बोले हैं भगवत गीता को, राइट? कृष्णा इज नॉट सम ऑर्डिनरी बॉय, राइट? कृष्णा इज नॉट योर फ्रेंड और माय फ्रेंड, माय ब्रदर, राइट? ऐसे नाम हो सकता है, बट कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ. ही इज भगवान स्वयं है. दैट इज व्हाई भगवत गीता गेट्स द क्रेडिबिलिटी फ्रॉम देयर, राइट? बिकॉज मेनी कमेंट्रीज भगवान को ही हटा देते हैं भगवत गीता से, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. क्या ही समझेंगे, राइट? अभी जो अपने सर ने एक श्लोक बोला, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण के 10 इंकारनेशन, तो वो है वेदानुद्धरते जगन्निवाहते भूगोलमुद्भ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते छत्तक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकते कृष्णाय तुभ्यं नमः. ये उनके 10 इंकारनेशन है. जिस पर डार्विन ने इसी को पढ़ के अपनी डार्विन की थ्योरी दे दी. पहला मत्स्य, डार्विन यही कहता है पहले मछली, फिर कूर्म कछुआ कच्छप अवतार, फिर वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर राम, फिर बलराम, नॉट कृष्ण, बलराम, देन बुद्ध, और लास्ट में कल्कि जो है. तो कृष्ण जो है भगवान स्वयं, वो अवतार नहीं थे, बाकी सबने अवतार लिया. उनकी सम पोटेंशियल came in each and every avatar, but with all supreme power, the Krishna appears in this life. That is the Lord. Thank you, sir. We will go forward. Krishnastu Bhagavan Swayam. This is a shloka from Bhagavatam, where just like sir explained, he is Bhagavan Swayam, others are incarnate. Read it loud. To become a right thinker. Like Arjuna. Then only we can understand the Gita. Yeah. So right thinker का बहुत मायना रखता है. Just like if you see the book, जो प्रभु जी explain करते हैं, right thinker just like I've written neutrality. Neutral में रहकर मतलब समझना बहुत important. Neutral का मतलब क्या है? What is the understanding I wanted to tell you? कि जस्ट लाइक मैं बताया ना, हम अभी क्या सोचते हैं, सपोज आई एम फीमेल और मेल, राइट? इंडिया से हूँ या उत्तराखंड से हूँ, राइट? बहुत सारे डेजिग्नेशंस रख के, राइट? ये सब के साथ हम सोचते हैं, राइट? बट वन हु इज न्यूट्रल, ही कैन अंडरस्टैंड गीता वेरी नाइसली, राइट? व्हाट डज इट मीन? वन हु अंडरस्टैंड्स दैट इज सोल, ही कैन अंडरस्टैंड गीता इन अ मोर क्लियर. जस्ट लाइक ना, अगर हम न्यूट्रल नहीं रहते, बायस्ड रहते हैं, इवन इन डे टू डे एक्टिविटीज, ऐसे ना दूसरों के ऊपर बहुत सारा जजमेंट्स होते हैं, राइट? अगर देखा, अरे ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, अपने बारे में बताते रहते हैं बस, राइट? ऐसा आपके पास जजमेंट है, तो क्या वो कुछ भी बोलेगा आप सुन पाएंगे? कुछ भी, वॉट एवर ही स्पीक्स, कैन यू अंडरस्टैंड हिम इन रियलिटी? नॉलेज तो आएगा ही नहीं ना, राइट? सो इफ यू आर बायस्ड, you cannot have real knowledge. So that is one thing. Approach Gita as a neutral person. Even though you are not neutral, just understand this and go forward. It will make you right thinker, right? Right thinkers can understand Gita, just like sir told, right? But reading Gita will make you right thinker as well. You getting na? Both go parallel. You can start. इधर तक आ गया, जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, you can become that right thinker. You will get, Krishna will. तो इसी पे कोरिलेट करते हैं. Absolute truth. एक पंडित जी थे, भगवान कृष्ण ने एक श्लोक लिखा, गीता में बोला है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ते जनाः
पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। इसका मतलब ये है कि अनन्यास की अनायास कोई भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी मेरा नाम का स्मरण करता है, एक बार भी मैं उसके पूरे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ और उसके योगक्षेम की मैं पूरी व्यवस्था करता हूँ। आई मैनेज ईच एंड एवरीथिंग डिजायर फॉर हिज और हर लाइफ। तो पंडित जी थे, दिन भर गीता पढ़े, बिल्कुल सुबह उठे, स्नान करें, गीता पढ़ें, जो मिल जाए भगवान को अर्पण करें, प्रसाद मांग के खा लें। बच्चे की बेटी की शादी होनी थी, उनको ये विश्वास था कि भगवान सब करे। अब पत्नी तो जैसे ही होती कि बेटी की शादी तय कर दी, फिर माँ ने बड़ी सुंदर थी, तो आप कहें कि भाई तैयारी करो, शादी का दिन आ रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम अपने बाप बाहर कहती, वो खुद करेंगे जिन्होंने ये लिखा है, हमारा विश्वास है, मंदिर रोज जाए। शादी के 3 दिन बचे, रिश्तेदारों का आना शुरू होने वाला था। पत्नी में तुम पैसे पूजा करते रहते हो, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर रहे, और उनको विश्वास कि गीता इज एब्सोल्युटली ट्रुथ, इट इज टोल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, और भगवान ने अगर ये कहा है तो बिल्कुल सही होगा, मुझे कहीं पर डाउट ही नहीं। उन्हें कोई टेंशन नहीं, रोज शाम को जब मंदिर से लौट के आए, पत्नी जैसे नॉर्मल वाली लगती है, तो वो तो फिर कुछ कर ही नहीं रहते, तो लड़ गई। तो बड़े परेशान हुए, पत्नी ने बड़े तर्क कुतर्क करे। तो वो जैसे आप देखते हैं ना, हाइलाइटर होता है, तो पहले एक हड़ताल आती थी, तो उन्होंने गीता पूरे 700 श्लोक पढ़े थे, रोज पढ़ते थे। तो उन्होंने जब 3-4 दिन बचे थे, तो उन्हें लगा कि बाकी गीता बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है ये श्लोक भगवान ने अपने श्रीमुख से न कहा हो। तो उन्होंने उस श्लोक की इस लाइन पे अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, इस पे उन्होंने वो लगा दिया हड़ताल कि मैं मानता हूँ कि ये बाकी 699 श्लोकास आर टोल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, बट दिस इज नॉट, क्योंकि मेरी फेथ है और भगवान ने अभी तक कुछ नहीं किया। और ये रोते जाए और उस पर लगा दिया, और उस दिन बहुत दुखी थे, रोज आ जाते थे 1-2 बजे के करीब खाना खाने गए, उस दिन शाम हुआ। तो जब आए तो देखा घर में सारी चीजें शादी की भरी हुई, कपड़े, सोने जवाहरात, खाने पीने की मिठाइयां, ड्राई फ्रूट। तो कहने कि ये कहाँ से आ गया? तो उसकी पत्नी ने बोला कि एक लड़का आया, सावले कलर का था उसका रंग, लेकिन उसके मुंह से कुछ जगहों से खून बहता, और वही कह दिया कि तुमने ये सब दिखवाया, और देख के चला। Then he realized मैं जिससे मानता था, तो वो जो उन्होंने हड़ताल लगाई थी, वो उनके मुंह पे कट्स हो गए, वुंड हो गए। वापस गए, मंदिर में बैठे, उसे ठीक किया कि प्रभु बहुत गलती हो गई, मैंने आपके बचनों के ऊपर अविश्वास किया। तो गीता को अगर समझना है, तो ये जब तक विश्वास नहीं होगा तभी ट्रूथ थिंकर बनेगा। अगर हम ये कहेंगे कि ये तो सब माइथोलॉजी है, सब किसी ने लिख दिया, आप अपनी उसकी वजह से कर रहे हैं, शुक्लाचार्य अपनी वजह से कर रहे हैं, या जो है इन लोगों ने लिखा, उन्होंने अपने पेज से लिख दिया, then you cannot understand. So if you want to understand, just believe it is the truth, and it is the truth, truth, truth. Yeah, so these are two spirits, मतलब जैसे हम भगवद गीता को अप्रोच करेंगे, क्या? और तीसरा है
to build relationship with Lord. जैसे पहले बताया, भगवद गीता clearly says हम सबका भगवान से रिश्ता है, right? अगर इस उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे कि I want to re-establish my relationship with Lord, you can understand the Gita in a better way. So just 5 minutes we'll stop, Roji. 10 अब minutes. इसमें भी देखिए थर्ड लाइन, आपने जितने बड़े बड़े भक्त पढ़े होंगे जो कृष्ण के भक्त रहे, वो उनका रिश्ता था। मीरा ने एक रिश्ता बनाया, सूरदास का एक रिश्ता था, दिखता नहीं था, लेकिन वो दोस्त मानते थे। तो एक दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए, उनका यह था कि डंडा लेके आगे चलते थे सूर के, सूरदास जी। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि इनको जरा परखते हैं कि कितना हम पे फेथ रखते हैं। तो एक दिन सूर का लिखा हुआ दुआ है, ये गड्ढे में गिर गए, भगवान ने डंडा छोड़ दिया और सूरदास को दिखता नहीं था, वो गड्ढे में गिर गए। तो उन्होंने श्लोक को, ये श्लोक अपना दुआ बोला कि बाह छुड़ाए जाति हो निबल जानी के मोहि, हृदय से जब जाओगे मर्द बदोगे तो ही। तो मुझे अंधा हूं इसलिए तुमने बाह छुड़ा दी या उनका हाथ छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्त माना है, मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तब तुम्हें मर्द बनूंगा। That is basically, unless and until we don't have a relationship, वो रिलेशनशिप दोस्त की हो सकती है, वो परब्रह्म की हो सकती है, वो मीरा की तरीके से उनके पति के रूप में हो सकती है। आप जो भी एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, बिना रिलेशन के विश्वास पैदा नहीं होता। And that relationship is not like forced on us. Yes, जो आपको अच्छा लगे वो उस रिलेशन में, Yeah, we have, like intrinsically we have it. We just forgot. That's what our Shastras say, right? And it will be revealed eventually. When you follow the process, it will be revealed. Okay? Yeah. जैसे भगवान Krishna is absolute truth. That is why Gita's credibility is from Krishna. And ये जो व्यासदेव है ना, अगर गीता पढ़े हैं तो व्यासदेव हर जगह पर लिखते हैं श्री भगवान वाचा। You might have heard this, right? श्री भगवान वाचा, श्री कृष्ण वाचा नहीं लिखते वो, right? To make it clear that भगवान बोल रहा है, भाई don't misunderstand, he is Krishna and he is भगवान, श्री भगवान वाचा कहते हैं। So he accepts that Krishna is भगवान. Not only him, many sages, इसमें 12 महाजन कहते हैं, कुमार, कपिलो, मनु. If you have, there are 12 महाजनास, Bhishma, Sukadeva Goswami, like this. There are 12 Mahajanas, means those who are seers of truth, जो देख चुके हैं, just like Sir was explaining, they have seen Lord, right? They are telling he is the Supreme Personality of Godhead. Not only that, even in the contemporary days, ऐसे बहुत सारे saints है, just like Sir was mentioning, Meera is there, Surdas is there, Lord Chaitanya is there, Ramanujacharya is there, right? These are all seers of truth. Prabhupada is there. ये लोग देख के हमको बता रहे हैं, okay? It's not just some belief, right? भगवान कृष्ण भगवान है. So this is the first, spirit with which, like, if you approach Gita, we can have a better understanding. दूसरा मैंने बताया था, to become a right thinker, and that can be done by start reading Bhagavad Gita. You can become a right thinker as well. Okay. Yeah, bathing. Last line. Can somebody read? Can you read? Reading in the message of Bhagavad Gita again and again, we can become a right thinker, even if we are not one. Which we are not one as of now, but yes, we can become a right thinker. And third one, which I mentioned, build a relationship with Krishna. Just like this has been discussed, we all seek relationships. Better habit with that person, where our relationship will not be cut, right? It will be a permanent relationship. And that is why, if you see Bhagavad Gita, there are 18 chapters. Each chapter is named as a yoga. If you know, first chapter, every chapter is yoga. What is the idea? Yoga is connection. Viyoga is separation. Yoga is
Connection with whom? Connection with Lord. Okay, so every chapter is named after yoga. Okay, and Bhagavad Gita is the science of relationship. It is just like I told you, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि गीता पढ़ के मतलब हमें करना क्या है, so this is the answer. You know, to revive your relationship. Gita is a science of relationship, right? And Krishna says this in the Bhagavad Gita also. अर्जुन को कहते हैं कि भक्तों से में सका चेती रहस्यम ये तद उत्तम. मैंने आपको भगवद गीता क्यों बता रहा हूं? बिकॉज भक्तों से में सखा चेती. सखा मीन्स व्हाट? Friend, mitra. And bhakta means you are devotee. You are both my friend and a devotee. That is why I am speaking Gita to you. So you are friend and devotee, you will be able to understand Lord. Right? So what does it mean? So that is building relationship, right? Once you start reading Bhagavad Gita, you will start building relationship with Lord, and you will understand Gita more nicely. So keep these three spirits in mind, right? With these spirits, try to approach the Gita, you'll have a better understanding. Okay. Yeah. So just contents of Bhagavad Gita, I'll just and we'll finish this off. So Gita में ना so Gita has five main topics are explained in the Gita. First one is, you can read together. Ishvara, God. Second one is Jiva or us. We are Jiva. Third one is Prakriti or the material nature. Fourth one is Kala or time. Fifth one is Karma. So Gita has all the contents can be categorized into these five. So we'll discuss in the coming sessions about each one of them, right? What has been told roughly, so that you'll get at least some picture of the Gita, so that this can serve as a motivation to read Gita on by yourself. Okay, and I'll end with this. Okay, I'll end with this. So if you have any questions, you can ask. Otherwise, we'll have a small quiz. किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. समझ में आया आज? So main things about what we discussed is गीता क्यों पढ़ना चाहिए, थोड़ा motivations लें from our daily observations only, right? उससे गीता को यूज करके कैसे हमारा नजरिया बदल सकते हैं, right? This we have seen, and after that गीता को अप्रोच कैसे किया जाए, right? So yeah. तो सब लोग कहूट ओपन कर सकते हैं. कहूट तो जी what's that?